Welcome to Jannat Learning's digital class. This video is for the Virtual University course Introduction to Computing, CS101. Topic 121. Control Structures, Loops. We hope you will find this informative and helpful. Please subscribe to Jannat Learning if you haven't already. We're thankful for your input and the opportunity to improve. A loop in programming is a sequence of instructions that repeats until a certain condition is met. Loops are a fundamental programming concept that helps programmers automate repetitive tasks and make code more efficient. A loop structure is made up of a control statement and a body. The control statement contains the conditions that must be met for the body of the loop to execute. The body is the block of code that is executed multiple times. आप लूप को सेल फोन के सिम कार्ड में बैलेंस की तरह समझ सकते हैं। मोबाइल फोन ऑपरेटर का सिस्टम तारीख के वक्त और रकम के साथ चेक कर रहा है। आपका सिम इस वक्त तक काम करता है जब तक कि काफ़ी बैलेंस ना हो और मियाद ख़त्म होने की तारीख और दीगर शराइत व ज़वाबित ठीक हों। There is code to get the table of number 6. You can see loop condition is I equals 1. And loop will execute the code below line until I is less than or equal to 10. And on each step I is increment by 1. Finally, when I equals 10, then loop is terminated. We copy the code. It was explained last and pasted in the compiler. And run the compiler. And see the result. After this, replace 5 with 6 and see the result. जन्नत लर्निंग डिजिटल क्लास में शिरकत का शुक्रिया। हमारा मिशन आपको तालीमी कामयाबी में मदद करना, आपके तालीमी सफ़र को हमवार और खुशगवार बनाना और आस के लिए जामे हल, मददगार वसाइल और माहिराना रहनुमाई फ़राहम करना है। हमारे कंटेंट में स्टडी की तजावीज़, इम्तिहान की तैयारी, इसकी हिकमत अमली, कोर्स के जायज़ा और बहुत कुछ शामिल है। सीखने वालों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल हों। आइए मिलकर तालीमी जिद्दत की दुनिया को फ़तह करें। बाकायदा अपडेट्स और कीमती इंसाइट के लिए जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें।